Very good morning, my dear students. I hope you are fit and fine. We were reading about the theme why do we need a constitution? In which theme we are also discussing about the importance of constitution for the government and also for the citizen. So let us start the further paragraphs. Thus, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी भी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं. All people living together in a country accept the written rules, the constitution of a country. Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory called citizens and also the relationship between the people and government. संविधान सर्वोच्च कानून है जिसे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिन्हें प्रायः नागरिक कहते हैं, के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच भी संबंध तय करते हैं. Constitution determines the relationship between citizens and governments. A constitution does many things. संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये काम प्रमुख हैं. First, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. First facts of the constitution. It is generating a trust. यह एक साथ साथ रह विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है. Second, it specifies how the government will be constituted, who will have power to take which decision. The second fact of constitution. The constitution specifies how the government will be constituted and who will have power to take which decisions. For different decisions, different persons have power to taking a decision. Third, it lays down limits on the powers of the government and tells us what the rights of the citizens are. तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें यह बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं. What is the rights of the citizens? Fourth, it expresses the aspiration of the people about creating a good society. चौथा, यह अच्छी समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है. It expresses the aspiration of the people about creating a good society. All countries that have constitutions are not necessarily democratic. जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों यह जरूरी नहीं है. But all countries that are democratic will have constitution. लेकिन जितने भी देश डेमोक्रेटिक हैं या लोकतांत्रिक हैं उनके पास एक अपना संविधान है. After the War of Independence against Great Britain, the Americans gave themselves a constitution. ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने संविधान का निर्माण किया. After the revolution, the French people approved a democratic constitution. फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस के लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी. Since then, it has become a practice in all democracies to have a written constitution. इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान होना चाहिए. तो कल की क्लास और आज की क्लास में हम लोगों ने ये जाना कि why do we need a constitution, importance of constitution for democracy and for a country which is ruling by a elected government. The constitution is the most important factor
for the government and citizens also. So, in next class, we will discuss about making of the Indian Constitution. Thank you.